Good evening, everybody. So, in this Radiant Soul, we have started this skill exchange program. And today we have the honor of having the esteemed guest, Ravi Garg. He will give you guidance on the retirement planning and finances and whatnot. So, everybody wants money, everybody loves gold, and this so much chaos is happening in the um, gold and silver and share market. And Ravi is an expert in all these. And we all want the expert advice. And I won't interfere much because I'm also a novice. I'm also interested to know what Ravi has to share. And finance is a world that always fascinates each one of us. But we lack the technical knowledge, I believe. So he's going to provide us the technical knowledge and he's very good at technical assistance as well. So I'm sure you will take a lot of notes. You will ask so many questions. Ravi will answer all your questions. He's very good at all of this. So over to you, Ravi. Thank you, ma'am. Thank you so much for this wonderful introduction. Thank you so much. I am glad that you have invited me for this wonderful session, and I will try to do all my effort, all my justice that yes, जो भी मैं आपको information दूं, मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहूंगा. I don't want to give any ज्ञान. I just want to give practical, implementable, executionable steps so that we all can take a absolute resolute today itself कि yes, आज हम इतना तो शुरू कर देंगे. And it's a बिकॉज हम golden time because New Year is starting. So we can यस have a measurable growth in our finances in 2026. यस एब्सोल्युटली यस सो फ्रेंड्स आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन आर वी रेडी then please type in the chat box that who wants how many of you want to create a 5 crore retirement corpus for yourself. Just type y in the chat box. Thank you, Swati ma'am. Yes, thank you, Parvati ji. Thank you, Erika. Thank you, Gurbeen. Yes. And how many of you are taking a concrete actionable strategy to create that 5 crore freedom corpus? That's the main question. Not me. Need more than 5 crore. Yes, Asha ji, but are we taking the constant step to reach towards that coveted 5 crore corpus? Because my tagline is that you should have at least a 5 crore freedom corpus, because that 5 crore freedom corpus, why 5 crore? Because through that you will be able to get a 40 to 50 lakh rupees of dividend income easily every year, and that culminates into 4 to 5 lakh rupees per month, and that will create financial freedom. So even if we have 1 lakh rupees of expense today, in 10-15 years that 1 lakh rupees will become a 3 to 5 4 lakh rupees of expenses, and 5 crore is really achievable, and I will walk you through all the steps, walk you through all the calculations. But I want to set the tone that how many of you want to get that 5 crore corpus, but not taking the action. That is the main thing. क्योंकि मैं जितना भी लाइक इंटरेक्शन करता हूँ अपने क्लाइंट से, प्रोस्पेक्ट से, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करता हूँ. So first, let me introduce about myself. I am a working professional. I am a full-time working professional working in a MNC company. But this finance, this retirement planning is a passion for me from last 25 years. I am investing in stocks from last, I guess, 30 years. I had started investment in stocks at the age of 11. वहां से जो जर्नी शुरू हुई, वो जर्नी आज तक कंटिन्यू है. और from that onwards, despite all the setbacks, all the booms and the crashes and everything, I had also done some mistakes in investing in stocks, mutual funds, property, herd mentality, everything.
But 2019 was a watershed year for me, where I had to suffer accident and I was on bed rest. And at that time, I realized how important financial planning is, how important retirement planning is. Now you will ask, what is the difference between the two? There is a hell lot of difference between the two. Financial planning is you are managing the current scenario of finances, and retirement planning is you are planning for the scenario ahead, 15 years 20 years ahead of you. एंड इसके बारे में इस टाइम पे कोई बात नहीं कर रहा. थैंक यू बीसीजी, थैंक यू. No one is talking about. Everyone is selling you insurance and mutual funds on the pretext of investment, but they are not doing a comprehensive investment planning, retirement planning, because they don't know the destination. क्योंकि ये ट्रेनिंग ही नहीं है किसी को. जो सारे हम जो लोग अभी हमारे को प्रोडक्ट सेल करने आते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, कुछ भी हो, they are not being told to estimate if we have a 1 lakh piece of expense, then what will be the expense after 5, 10, 15, 20 years. अभी तक आपको कोई भी इंटरमीडियरी, कोई भी ऐसा कोई बंदा अभी तक आपको एनकाउंटर आपने करा है, कुछ देख मिला है आपको, हु इज रेडी टू टेल यू what will be the amount you will be requiring after 10, 15, 20 years? Please type yes or no, y or n. Thank you, Swati ma'am. So today's session will be based on that only, क्योंकि मेरा थ्रस्ट, मेरा फोकस यही रहता है कि हम किस तरीके से आगे का जो हमारे को 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो हमारी सिचुएशन है, उसको हम कैसे किस तरीके से ठीक कर सकें. Yes, we will share the recording. Yes, yes, thank you Swati ma'am for replying. So are we ready? Should we start? Thank you so much. Please let me know if my screen is visible. Yes, visible. So my first question, if not now, then when? अगर हम अभी शुरू नहीं करेंगे, if we start do not start planning about our finances, then when? We plan a lot, but we do not execute. हमें पता है कि we have to invest in SIPs or mutual funds. SIP and mutual funds are the same thing. SIP is monthly investment systematically, and mutual fund is like lump sum investment, right? We have to invest in stocks, we have to invest in mutual funds. हमें सब पता है. We know each and everything, but we are not taking the action, and that is the main problem. We will do it 1 week later, we will do it 1 month later, we will do it 3 months later. Procrastinations takes over on us. How many of you are victim of procrastination in terms of retirement planning or financial management? Can you type P in the chat box? Procrastination. P. Thank you, Gurvin ji. Disha ji, thank you. Parvati ji, Abha ji, thank you. Swati ma'am, thank you. Yes, procrastination. Procrastination always takes over us. And what is the antidote? And what is the number one statement of this procrastination? I will do it later. Yes, are we resonating with it? Are we feeling the same thing that I will do it later? अभी टाइम नहीं है. We don't have time. We have so much of office work, we have so much of family work, we have so much of this, we have so much of that, but we all are busy in earning money. Yes or no? We all are busy in earning money, but we don't have time to manage the money, and we don't have time
We don't have time to make money from money. Am I making sense, or is it going above the head? Yes, no, हाँ जी, ना जी. You're making sense. We all know it, but we want answers, Ravi. Yes. I will give all the answer to all the questions. I will not stop till I will complete all the answers in the room. But we need to be 100% attentive here. I would request, please keep aside your mobile phones or your distractions for just next 30 minutes. Just next 30 minutes. I will not ask you more than that. But these 30 minutes will be a life changing 30 minutes for you in terms of your financial management. We all have this problem of I will do it later. And this I will do it later is robbing you of the compounding returns which you can have through early investment. एंड अगर हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं देन वी आर लूजिंग मनी बिग टाइम एंड नो वन विल टेल यू. हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. वी आर अर्निंग गुड. वी आर हैविंग अ डिसेंट सैलरी. वी आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू आवर बिजनेस, थ्रू आवर सैलरी, थ्रू on anything. But no one asks the deep question that what is the road ahead 5 years, 10 years, 15 years down the line. How many are resonating? How many are feeling that yes, this is the exact scenario which is happening? We are so much engrossed in earning money that we don't have time to manage the money. Then why, what is the benefit of earning so much money? अगर हम वो जो पैसा आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग आउट टाइम जस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर इन अ मंथ. अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी, देयर वाज अ रिसेंट स्टडी एंड people were spending 5 minutes in a year on tracking their money and investments. Just 5 minutes. And then people say, our money is not growing. It is languishing. हम जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं वो नीचे चला जाता है. It is a job. It is a, not I will say full time job, but it is a job which requires at least half an hour or 1 hour every month. That's it. Nothing else. Either you can do it yourself or you can take the help of a professional. Can we do our own surgery in the operation theater? Can we fight our own court cases in the High Court, Supreme Court? Yes, no. Can we repair our own car before going to garage? Yes, no. Then No. why in this financial management we think that DIY, do it yourself investment is better? Because there is no barrier. आप अपने आप अकाउंट खोलो, अपने आप किसी भी एक्स वाई जी स्टॉक्स में पैसा लगाओ विदाउट सीइंग द फंडामेंटल्स. आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाओ विदाउट सीइंग द ट्रैक रिकॉर्ड एंड देन यू विल से हमारा तो पैसा बनता ही नहीं है. यस, नो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सो ऑन पेपर Absolutely right. लाइफ लुक्स फाइन, थैंक यू मैम, बट हमारे पास अंदर. एंड जस्ट आस्क, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड आस्क योर सेल्फ, हैव एनीवन आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि भाई what is your future plan in terms of personal finance? Has this subject has been taught anytime anywhere in school, college, or office? And this is a problem for everyone. This is not a money problem, because if we are not taking the this money right now, this is our mindset problem.
And especially, I want to focus on females. Why? Because if you are taking care of money, then you are impacting two generations. One is yours, which is you yourself and your husband, and one is your child, your kid. So if you are not taking the money decisions consciously in a good manner, then you are affecting two generations. How many of you have delegated or transferred this money decision to your spouse? You are not doing it yourself. Yes. Are you feeling happy about it? This is not question. This is the answer. Please type it in the chat box if anyone is feeling happy about it, or if anyone is feeling that I need to take charge. Just tell me, am I making a wrong assumption that you are destroying or you are not taking, if you are not taking money see decisions consciously, then you are like playing the life with two generations, because males are always busy. Males are always busy in their office work or either in their business work or either in this or that. But it's up to you, to us females. And just to tell you a fact, 90% of my clients are females only. Because no one speaks to them about these financial matters in a simplified, crystallized manner. कहते हैं ये तेरा काम थोड़ा ना है. This is not your department. This is not your work. Why not? If you are earning, then you should have the decision power. You should have the discretion to decide where to invest your money. And even if you are not earning, then you should have the discretion to invest your household savings. सो आज के सेशन के बाद कौन कौन लड़ने वाला है अपने घर में अबाउट मेकिंग द मनी मैनेजमेंट डिसीजंस बिकॉज इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग इट्स अबाउट डिस्कशन you just need to have a honest conversations with your spouse, and we think that we have a less income problem. No, sorry, we don't have a less income problem. We have a procrastination, delay, silence, thinking that things will happen automatically, it will work out in the future. No, it doesn't But like that. Ravi, there are many women here, they don't earn Yes, themselves. that's okay. That's okay. We can, I will address that issue as well in the coming slides. But they can have a honest discussion with their spouse that okay, you are taking all the money decisions, I'm not earning, but what is about our future planning? Can they just have a honest and fruitful discussion in a healthy environment in the family? That is my major concern, because females think that no, we do not have to discuss about this. Yes, exactly. Exactly, Revaji. I just wanted to say about this. Family money should be planned together. I take all my money decisions with consultation of my wife. I do not take any decisions, despite being a financial planner for many clients. But still, I take all the decisions. Yes, it has to be collective, Priyanka ji. And you are 50%.
आप गाड़ी के दो पहिए हो, अगर एक पहिया भी पंचर हो जाता है तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है. सो यू आर ऑल्सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली equally, even if you are not earning. If you are not performing the duties at the home rightfully, in a right environment, in a right manner, then sorry, house will disbalance. Yes, no, maybe. Please type yes, why in the chat box. Yes, ma'am, it's up to you. If you want to do as a planning as a family or as an individual, it's up to you. Not a issue, Dishaji. You can plan accordingly. And we think that by watching many videos, by taking so much of information on Instagram, on YouTube, on Facebook, on everywhere, we will grow our money. But हम एक्शन नहीं लेते. How many of you are watching financial videos on Instagram and YouTube shorts, your YouTube? And how many of you have read some financial blogs, books, magazines, websites, articles? Thank you, Parvati ji. And are you taking any action after watching this? That is the question. Yes, absolutely, Priyanka ji. My 8-year-old daughter knows that SIP investing is much better than investing in property or investing in gold or silver. Yes, gold and silver has given good returns, but historically, if we see in last 15, 20 years, 25 years data, it has given only 10 to 11% historically. It is the only equities and equities which has given CAGR, a compounded annual growth rate of 16 to 17%. Great. Congratulations, Parvati ji. Amazing. One of my client, classic case study, he had come just before the COVID to plan and discuss in 2020, January, February. And he said, that's a plan तो बहुत अच्छा है, but I don't have money to invest. मैंने कहा okay. मैंने कहा but you can start with a very small amount also. No, I will save something, some amount, and I will do it later. Same answer, same type. 5 years में कोविड भी आ गया, मार्केट वहां से 4 टाइम हो गई. Nifty had hit a 7,500 low in 2020 in March, in during the COVID times, and now the Sensex, the index, the Nifty of the Indian market, where stocks are being traded. अगर आपको किसी को निफ्टी नहीं पता या NSE निफ्टी नहीं पता, तो indices, it's a stock market indices where a group of 50 stocks trades together, and this denotes the denominator, like the barometer of the Indian economy. सो उस टाइम पे मार्च 2020 में वो 7,500 से आज वो 26,000 पे हो गई है. अराउंड 4 टाइम्स रिटर्न इन जस्ट 5 years. सो इमेजिन हाउ मच मनी, हाउ मच टाइम he has lost just by thinking that I will do it later. And that is the biggest problem of us. We wait, and but compounding तो चल रही है. Either it is working for you or against you. अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छी बात है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भी और लोगों को तो पैसा बन रहा है. There are so many investors: Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, Ashish Kacholia, Vijay Kedia. There are so many investors who are just relying on this dividend money. They are not doing any job. They are just relying on the power of dividends. They have done their investing in last 20, 30 years, and now they are not doing anything because they have invested the money. And we have a myth कि हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए. And all to all those people who feel that we need a very big amount,
आई विल डिस्पेल दैट मिथ, आज वो मैं मिथ भी आपका तोड़ दूंगा. I will run through all the calculation one by one, which will show you that even with a very small amount, you don't need big money at all. You just need consistency. And if you consistently invest the money, then no one can take away your abundance. Yes, yes. Even if you start with 500 rupees, now please tell me, all those people who are earning or not earning, can't you start a 500 rupees SIP also? Who is agree or disagree? Can you start a 500 rupees SIP or not? Even to housewives, even to females who are not earning, can you ask your husband, can you save that 500 rupees in your household savings? Yes. Thank you Revaji, thank you Gurvin ji, thank you Swati ma'am, thank you Chetan. So if we are ready, and you will say that 500 रुपए से होता क्या है, 500 रुपए से कुछ नहीं होगा. बट 500 रुपए अगर आप 30-40 साल कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा. डू वांट टू नो द नंबर्स? आई विल शो इट टू यू. आई विल शो इट टू यू द नंबर्स एज वेल. बट अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो सॉरी. यस, लेट्स स्टॉप टॉकिंग and let's look at the real numbers together. Okay, who are ready to see the magic of 500 rupees SIP? Please type R in the chat box. Just 500 rupees. R. Yes. Okay, let's start. So you will say 500 रुपए से क्या होता है? What will happen with 500 rupees? Can we start with 500 rupees and gradually step up 10% every year? पहले ईयर हमने 500 रुपीज लगाया, दूसरे ईयर हमने 550 लगाया, तीसरे ईयर हमने 600 लगाया, चौथे ईयर हमने, फोर्थ ईयर हमने 7. इस तरीके से हम वी कंटिन्यू टू बिल्ड इट अप. 500 rupees, 10% step up, expected return, let's take 15%. In 10 years it will give you 1,97,000. You have invested Is it 95,000, you are getting 500 150 daily or 500 monthly? What is the monthly. 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 And 15 years, see, 3 times return, from 1.97 lakh to 5.54 in just 5 years extra. And in 20 years, 14 lakh rupees. Even if you are just investing 500 rupees and consistently investing for 20 years, 14 lakh rupees is not a small amount. Those people who think that they don't have the money to invest, those who have the money to invest, then why not to add 1 0? See, just by adding 1 0, 5,000 rupees, you can have 1 crore, 39 lakh. Those who are earning can have that 5,000 rupees SIP. And those who are just starting their career, and you are at 25 years of age, just imagine that you have started a 5,000 rupees SIP today at the age of 25, and you continue to invest for 25 years. That becomes 3 crore 29 lakh. So either you have to give the money or the time or the energy.
you have to give at least two elements. You can't skip all these three elements. या तो आपको रिटर्न कमाने के लिए या तो आपको टाइम देना पड़ेगा, या तो आपको मनी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी. And just imagine, in 30 years, this 5,000 rupees of investment in 30 years becomes 7.51 crore. Is it a good number or a bad number? By just investing 5,000 rupees. एंड अब कहोगे सर 5,000 रुपए से 35-30 साल कौन इतना टाइम लगेगा, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है. तो आप अमाउंट बढ़ा दो. यू मेड इट 20,000, हो गया सर 30 करोड़. यस. यस जतन, एब्सोल्युटली. So that reality, that honest analysis, no one is talking about. Everyone is saying, please invest in mutual funds, please invest in ULIPs, please invest in insurance, please invest in stocks, please invest in this. But आपकी डेस्टिनेशन क्या है ये नहीं पता आपको. अगर आपको यहाँ से चेन्नई जाना है, आप सोच रहे हो कि हम आगरा पहुंच के या लखनऊ पहुंच के या मुंबई पहुंच के हम वी रीच आवर डेस्टिनेशन ऑफ चेन्नई. वी आर आपकी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी 5 करोड़ की नहीं होगी. आई एम 100% श्योर. इट विल बी मैक्सिमम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़. इससे ज्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी. बट क्या वो 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी सिक्योर, कैन दैट 1 करोड़ पॉलिसी सिक्योर योर रिटायरमेंट? नाउ यू विल से भाई हमारा 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस है, तो हमारे को उस हिसाब से हमारे को कितना एक्सपेंस चाहिएगा 10 years, 15 years, 20 years आफ्टर डाउन द लाइन. डू यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड? हाउ मेनी हैव दिस क्वेश्चन? यस. मैं यही पूछना चाहती थी आपसे कि ये जो 7 लाख आपने कैलकुलेट किया है 20 साल बाद जो है, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से अंदाजन 80 लाख के बराबर हो जाएगी. लेट्स टेक साढ़े तीन अनदर करोड़ एग्जांपल जो मैम. आपने बोला है, 3.5 करोड़ जो लेट आपने बोला है, 20 साल बाद लेट्स इसकी वैल्यू महंगाई दर के हिसाब से अगर देखेंगे तो 80-90 हजार लाख के करीब करीब हो जाएगी. तो let let's take another example. This calculator will answer your query. My screen is visible? Yes. हाँ So जी. suppose if you have this 1 lakh rupees of monthly expense today, right? हाँ जी. ठीक है. Right now I'm 41, I'm taking 2025. आज की डेट में मेरे को 3.5 करोड़ रुपए चाहिए for my retirement. Let me show it to like this here. So today my 1 lakh rupees of expense, for to cover that 1 lakh rupees of expense, I need 3.6 crore to comfortably retire. But I don't have that money, so I'm not retiring. 5 years later, that 1 lakh rupees of expense will become 1.33, considering the inflation. 10 years later, this 1 lakh rupees of expense will become 1.79. So does this answer your question, ma'am? Sorry, I didn't was able to recognize your name. जो आप पूछ रहे थे वैल्यू. आभा. आभा शर्मा. Yes. Yes, ma'am. So, does this answer your question that 1 lakh rupees का, because हमारे को एक्सपेंस के हिसाब से हमारे को कॉर्पस चाहिए. इट कैन बी 50. कॉर्पस तो आप कितना मर्जी भी बना सकते हो कि 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़. दैट्स नॉट ए इशू. बट आपका आज का द एक्सपेंस यू हैव राइट नाउ टुडे, वी हैव टू प्लान आवर फाइनेंसेस इन दैट मैनर कि आज हमारा 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस है अगर मंथली, देन सपोज आपका 1.5 हो सकता है, सपोज आपका 50,000 भी हो सकता है. सो लेट्स से आपका सपोज करके 50,000 है, देन वी नीड लेस अमाउंट, देन वी नीड 1.8, देन इट विल बिकम ग्रो, देन इट विल ग्रो अकॉर्डिंगली. बट अगर आपका 1.5 लाख है,
तो वो फिर हमारे को उस हिसाब से कॉर्पस चाहिए। 1.5 से हमारा और 5.4 हमें तो चाहिए आज की डेट। पर हमें तो कॉर्पस अगले 20, कम से कम 20-25 सालों के लिए चाहिए, एंड दैट टू यस विथ कैलकुलेशन ऑफ महंगाई दर जो बढ़ेगी उसके हिसाब यस, से वहां पे पूरा ये मेरी लेफ्ट वाली शीट काम में कैलकुलेशन। आती है। तो हमारा सो तो हाँ जी, लेट कॉर्पस तो लेट बहुत मी बड़ा रन। हो जाना चाहिए, है ना? So can you tell me your monthly expenses? I can run through right now. Or let's take a 1 lakh rupees of expense. 1 लाख। Okay. So ma'am, let's take a hypothetical scenario right now. Okay. 1 लाख रुपीज का हमारा एक्सपेंस है, और आज मेरी मेरी एज 41 है, 2025 का ईयर है, और 3.6 करोड़ मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी। ओके। इन्फ्लेशन रेट में 10% लेकर चल रहा हूँ, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में 14% लेकर चल रहा हूँ। ओके। राइट, यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? हाँ। नो। एनी क्वेश्चन? बिकॉज यहां से मामला इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम्म। 10% इन्फ्लेशन है, 14% मेरा रिटर्न है, जो मैं इन्वेस्टमेंट करके, कहीं पे भी मैं इन्वेस्टमेंट करके मैं आई एम गेटिंग दैट रिटर्न। मेरा स्टार्टिंग कॉर्पस आज की डेट में 3.6 करोड़ है। उसके ऊपर जो मेरे को रिटर्न आ रहा है वो 50 लाख रुपीज पर ईयर का रिटर्न आ रहा है। इज इट क्लियर टिल नाउ? या। एनी क्वेश्चन? नो। एंड वी नीड 12 लाख रुपीज ऑफ एक्सपेंसेस एवरी ईयर, बेसिस 1 लाख रुपीज मंथली। राइट? या। क्लियर? सो 50 लाख हमारा रिटर्न आया, 50 लाख रुपीज वी गॉट द रिटर्न, 12 लाख रुपीज हमने एक्सपेंस कर दिया, बच गया 38 लाख रुपीज अराउंड। दैट बिकम्स हम हाउ मच? वी स्टार्टेड विथ 3.6, that remaining 38 lakh rupees got added to the final corpus. Is it okay till now? Do I need to repeat again? I'm Yes, ready to repeat again. but your corpus is your corpus. We don't have any corpus, so do it accordingly. एंड So आपने तो पूरा जो है वो 14% का हमको रिटर्न दे दिया। हमने yes, तो डाइवर्स जगह जगह पे किया हुआ है, हमने एफडीज भी okay, ली हुई हैं जिससे हमको जी 6.4 आ रहा है। हमने जी, हर जगह से तो हमको 14% तो आ नहीं रहा। हमने ठीक गोल्ड है। भी लिया हुआ है, हमने मोटा मोटा एफडीज कितना भी आ रहा है ली मैम? हुई हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने जो पूछा है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। नाउ कैन आई टेक 7% जनरलाइज रिटर्न हाँ ओवरऑल? 7%। हाँ 7% हम मान सकते हैं क्योंकि डिफरेंट वेन्यू से हमको अप्रोक्सीमेटली 7% आ सकता है क्योंकि हमने ओके, एसआईपीज की हैं जस्ट जो उससे हमने। पहले, लेकिन जस्ट उससे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन रन थ्रू करना चाहूंगा कि हाँ जी। 3.6 करोड़ के बाद हमारा ये बन गया 3.98 करोड़। यहां तक क्लियर था मामला मैम? हाँ जी, ये तो सही था। यस। अब वो नेक्स्ट ईयर हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया बैलेंस। जी। हम्म। नेक्स्ट ईयर हमारे को 10% इन्फ्लेशन की वजह से 13.20 चाहिएगा। चाहिए फर्स्ट ईयर रहेगा, हमारे को हाँ। 12। राइट? ये हम्म। कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई तो हमारे को सब कुछ समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और ये हमारा फिर कंटिन्यूसली चलता रहेगा टिल द एज ऑफ 100, 120, जितना भी आप बनाना चाहो कर सकते हो आप। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 7% इंस्टेड ऑफ 14%। 14%, हाँ। ठीक है, ये 7% मैंने डाल दिया। हम्म। दैट इज द साइलेंट डेमोन। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज हमारा जो अमाउंट रिक्वायर्ड था वो 12 लाख, फिर 13 लाख, फिर 14 लाख, 16 लाख, वो हाँ। इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता हाँ, जा रहा है। बढ़ता वो जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। राइट? हम्म। बट हमारे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बिकॉज ऑफ एफडीज, ये हमारे को ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वी आर, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन एफडीज देन आर मनी इज सेफ। सॉरी, प्लीज ब्रेक दिस मिथ दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन एफडीज। आपकी इन्फ्लेशन 10% है, एंड यू आर गेटिंग मनी, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट है 7%।
You are lot of losing person. 3% every year. Hmm. So are you gaining money or are you losing money? Losing money. That is the number one crucial point I need to make today. Because no one is talking about this in the whole industry. Everyone is selling. Sir, stocks le lo, mutual fund le lo, insurance le lo, ULIP le lo, ye le lo, wo le lo. But what is the impact of inflation on your finances? No one is talking about that. Right, ma'am? Any question? So let me run through this sheet again. 3.6 करोड़ हमारे पास हाइपोथेटिकली आ भी गया, मैं 41 की एज में मैं रिटायर हो गया, मेरे पास 3.6 करोड़ का मेरे पास कॉर्पस आ गया, एंड मैंने सारा पैसा एफडी में लगा दिया 7% इंटरेस्ट रेट पे. By the age of 65, I will be run out of money. By here. Because my expenses are rising through the roof, but my returns are not giving me the adequate amount of capital to cover these expenses. Right, Abhaji? तो 25 साल बाद आप नेगेटिव में चले जाएंगे Yes. अप्रोक्सीमेटली. Yes. So that's why I wanted to show you the real numbers together. But Ravi, who is a person who is 60, already retiring or retired, Right. वो अब क्या करे? He has made So enough mistakes, yes, ठीक है, but now he has to survive yes, and time is running against. yes, This is also maybe everybody here is not very young, so people are having this question in mind also. yes. So, ma'am, the answer is start today itself because you still have 30 years to live. According to World Health Organization, तो बच्चों average के लिए तो कर age, ही सकते हैं. what, ma'am? What about, ma'am? हम अपने बच्चों के लिए तो अभी से कर ही सकते हैं, कम से कम जो गलतियां हम कर चुके हैं वो तो सुधार ही Yes. सकते हैं हम. एंड मैम बच्चे बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्मार्ट हो गए हैं, एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं, बट बच्चे बिकॉज ऑफ दे आर इन्वेस्टिंग द दिस रिटेल पब्लिक इज इन्वेस्टिंग, दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट फॉलिंग, अदरवाइज मार्केट वुड हैव फॉलन वेरी मच डाउन. These young generation, this third power, तीसरी महाशक्ति, one is FII which is selling, second is DII which is buying domestic institutional investors, and third is retail, just like you and me, normal people who are continuously buying. I will give you one data. At one point FIIs हम सबको पता है जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, foreign institutional investors. At one point of time, 92, 95, 96 ke around, they were controlling 45% of the Indian market. 45%. Now they just control 15%. 1 5. Who is buying that 30% extra? Us, we retails are buying. Right? Now, coming to the question Swati ma'am raised, अगर कोई 60 years का already है तो उसके लिए क्या करेंगे? We have to still plan for 30 years at least, because according to the World Health Organization, average expectancy of life for a female is 89 and for a male is 90. These are WHO figures. These are World Health Organization's figures for an Indian male or female. And US may Warren Buffett is still taking AGMs, standing 3 to 4 hours at the age of 95. When I had visited US in 23 and in 22, people at the age of 85, 88, 89. My hotel cab driver was 88, who used to take me from the hotel to the office. And सब जगह पे वॉलमार्ट, टारगेट, मेसीज, जेसी पेनी, सब जगह पे all the salesmen were above 80.
Ravi, when you give the answer to this question, also add the rising health expenditure above the age of 60. Because denture, eye, cataract, everything has to be included. Then the corpus will look different than the young person or yours at 40 years age. Yes, that's why we need to start as soon as possible, ma'am. That's why we need to start as soon as possible. जब जागो तभी सवेरा. आप आज से स्टार्ट करोगे 5 साल में. You just give me 5 years. In 5 years, all the situation will be changed. I have changed my life in 5 years. In 2019, I had a debt of 1.5 crore, and today I am debt free. So you just need 5 years of consistent planning, step by step So method. let's make a plan for someone who is 60 and doesn't have a big campus. So let's make a plan. Let's plan. Sure. Let's run through the numbers again, ma'am. Let's run through the numbers. 60 and average corpus is how much? Then we have to reduce the expenses as well. So how much would be the corpus? 1 crore, 1.5 crore, 2 crore, 50 lakh. How much? No, why reduce the expenditure? A person can have the expenditure of 1 lakh average. This is Okay. the normal expenditure. Okay. So then, if give me a rough figure that how much corpus you would want to have. Means how much I would be investing. Yes, how much you will be investing, or how much the corpus you will be having, or how much money you already having the money, like 40 lakh, 50 lakh, 60 lakh, 90 lakh, and how much you can invest additional money on a monthly basis. I can run through all the Say, numbers just now. say start with low numbers, 20 lakh rupees I have, and I can Okay. invest 20,000 rupees, maybe 15,000 a month. Okay. Yeah. Okay. So 15,000 a month. We are not increasing step up, so I'm reducing it. 15% return, and let's take as 10 years. So that 15,000 rupees of investment every month in 10 years, ma'am, by the age of 70, you will be having 41 lakh, right? And you are having a lump sum of already 50 lakh rupees, right? So, right, Swati ma'am? 20 lakh. 20 lakh. Okay. So 20 lakh rupees at the rate of return 15% in 10 years, it will become 80 lakh rupees. So 80 lakh from here and 41 lakh from here. It will still become 1.21 only. Okay. And you have to continuously uh, look at some situations where you have to invest and you have to earn, and you do not have to depend on this money, because it is a very grave, a very difficult situation otherwise. जहाँ पे then you will have to depend on your kids So, for the so money. this was the hypothetical. What should be the good scenario? How much should be monthly investment of a 60-year person, and how much corpus one should really think of? So ideally, ma'am, one should invest at least 30% of their salary, 30 to 40% of their salary or income or cash flow or whatever the amount they are having. So suppose I'm taking example of a Housewife. person, I'm a housewife. housewife, so I can only rob the husband's pocket. So there, then you have to plan together. You have to plan and discuss. Okay, what is just I'm just concerned about my future. Can you please tell me how we are planning to live our life after the age of 60, 70, 80? What is our investments? What is the financial position right now? Today, just in the morning today itself,
I had a discussion with a person who was approaching 57, 58. He was employed, but he was little bit worried. Then we run through all the numbers. He had a plot in his village. He had a home in Bangalore for 2 crores and some savings and all that. So I just suggested that, sir, after this job, you can sell this flat of 2 crore and then you can move back to your hometown, your village, which is already having a plot of 30, 40 lakh rupees. And you can develop that plot, create houses on that plot, and just invest that 2 crore rupees in a good balanced mutual fund. And then you can be able to run through. This is a summary, nutshell, review, analysis of 1.5 hour discussion just today morning at 10 a.m. So we need to be very careful and plan. And So if हमें someone is earning 1 lakh rupees per month, they must invest 30,000. This is the bottom line, thumb rule. actual, yes. And if they do not have any EMI, And then for how? then make it 50-50. 50% towards expenses and 50% towards investments. So idle, Okay. the ratio is 30-30-30-10. 30% towards investment, 30% towards expenses, 30% towards EMI, and 10% towards your personal happiness. Okay. So you're keeping 30% EMI for a bigger purchase or something, some big investments. Yes. So suppose you are at age of 55, 60. So till now, I suppose that you do not have any EMI and you have already paid all the EMIs. So whatever the amount you are earning, suppose you are earning 1 lakh rupees. So I'm supposing that 30-40,000 rupees will be your expenses. Rest all the money, 50,000 rupees, you can invest in different stocks, different mutual funds. That we have to discuss when we sit together and we plan together. And there are two, three things which we hear. Just give me, This allow one me is 5 minutes, ma'am. equity. Then I will ask, I will answer all the questions. I want to complete all the slides and then just 2-3 slides more, and then I will answer all the questions. And EMI is a big demon. Debt is a big demon. I have seen in my life. So I always urge everyone, all my friends, clients, prospects, everyone, please pay off this EMI as soon as possible. And if we want to have true abundance, just continuously earn, save, invest, and repeat. We have to follow the Sir, I process. have a doubt about this EMI because you must also have no आपको भी लगा होगा because last year the market was high. So for example, if I invested 1 lakh, then with interest it was like 2 lakh investment. And right now the market is down, and even though the 2 lakh of investment is only 2.5, isn't it? So, what is the right way? Should we take out that money when it is high and then again invest, or we should just keep on investing? That's where a role of a financial consultant comes into picture. Because if I tell you, I wear 42 size right now. If you tell me that you please wear 36 or you please wear 44 or 46, will it suit me? No. We have to custom fit. We go in a trial room, we trial the like we go in a trial Yes, room I'm and try talking the about the clothes whole and Ravi, scenario. can I'm I not say talking about a something? particular share. I'm talking about the stock market is down right now. And okay. last year it was high. So the Mhm. value of investment was double last year and as compared to this year. So what is the right kind of approach? Like when it is high, should we take out the money and then reinvest the same amount? Or we just keep on that EMI, we just keep on no giving that money every month.
I'm again repeating the same answer, ma'am. That's where the role of a financial consultant comes into picture. When you are ill, when you have a fever, when you have some disease, you go to a doctor. You don't take paracetamol continuously after 5 days. After 5 days, you go to a doctor. That's that's why I also suggest, yes, you can do it yourself. Market is going high, you can take out the money and then invest somewhere, but I would not suggest to time the market, because we are in this next 10 years will be a golden period, golden era. Whatever Ravi, the can I? Sorry, I'm interrupting you. Can I say something? I wanted to answer the question ma'am just asked. मुझे भी yes, ये सेम प्रॉब्लम थी जो आप पूछ रहे हो, और इतना वो है मतलब अरे मार्केट हाई है निकाल दो, मार्केट लो है रख लो, मतलब मैं यही करती थी। एंड आई यूज्ड टू डिस्कस दिस विद रवि। रवि ने बोला मैम थोड़ा सा ना आप इसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ, आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत है विच यू आर नॉट शोइंग। अगर आप ये नहीं करोगे योर मनी विल नॉट ग्रो। तो मैंने वो शुरू करा। एक साल में मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता रही हूँ, मैंने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करा है कभी भी। आई एम नॉट वर्किंग, आई एम अ हाउस वाइफ। एक साल में रवि के कहने से मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। कहाँ से करा है मुझे नहीं पता, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, पर कंसिस्टेंटली करा है, एवरी मंथ करा है। लास्ट मंथ रवि ने मेरे को ही सेंड्स मैसेजेस एवरी मंथ, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। फर्स्ट और सेकंड को रवि के मैसेजेस आते हैं। लास्ट मंथ उन्होंने मेरे को मैसेज नहीं भेजा। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, मैंने बोला रवि का मैसेज नहीं आया। थर्ड को मैंने रवि को मैसेज करा है ना रवि, मैंने आपको मैसेज करा था कि आपने इस बार yes, मैसेज नहीं भेजा कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना है। बोला मैं टेस्ट कर रहा था कि आपको याद है या नहीं है। तो मुझे याद था थैंकफुली, एंड आई पास्ड दैट टेस्ट। तो मैंने वो इन्वेस्ट किया। तो मैं अभी देख रही थी दिसंबर में ही कि दैट आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, और मुझे नहीं पता कहाँ से। तो फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल जो वो रवि बोल रहे हैं वो है, और वो फ्रूटफुल है। तो मतलब आई आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। तो वो आप अपने आप नहीं डिसाइड कर पाते हो, मैं भी अपने आप नहीं डिसाइड कर पाती हूँ कि मुझे ये स्टॉक रखना है या निकालना है। दैट रवि ओनली टेल्स मी, मैं अपने आप से नहीं करती हूँ वो सब, और बाय गॉड्स ग्रेस ठीक चल रहा है। तो आई थिंक thank you. आई विल सम अप हियर नाउ। रवि यू कैन टेक ओवर, मैंने बीच में आपकी बात काट दी, पर मुझे Yes. वो मतलब मुझे था कि मैं ये बोलूँ, अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँ। So So Parvati we ji, all should take it's Ravi's appointment. Yes, I would thank you suggest so much. that. I would Thank you so suggest much, ma'am. that क्योंकि Because actually क्या है, no one speaks in a honest manner about your finances. नो कमीशन एजेंट, नो म्यूचुअल फंड एजेंट, नो इंश्योरेंस एजेंट। इनका नाम एजेंट क्यों रखा हुआ है? कभी आपने ये सोचे वाई दीज आर कॉल्ड एजेंट्स? बिकॉज एजेंट्स वर्क ऑन कमीशंस एंड कंसल्टेंट वर्क्स ऑन अपफ्रंट फीस। जस्ट गिव अ थॉट अबाउट इट। सो you please, I would urge every one of you, whatever the person you know, whoever the person you know, whoever the person you trust, please take help of him. This is not a field जहां पे आप खुद कर सकते हो। एंड ये मेरी मेन थिंग है कि इवन इफ इट्स ओके इफ यू डू नॉट अर्न, बट यू हैव द राइट, यू हैव द फुल राइट, बिकॉज इट इज इन योर फैमिलीज इंटरेस्ट to know the financial clarity, the goals, the destination, the amount of money which we will be requiring, everything. And till the time we do not create a system, till the time we do not create a structure, till the time we do not create a discipline, motivation goes away. आज मैं हूं, आपको बता रहा हूं, you will be able to remember only for next half an hour, 1 hour. That's it.
After 1 hour, WhatsApp status, Instagram stories, YouTube shorts, Facebook posts will take it over. Your family will take it over. And last, not the least, simple message, simple line, please start today. 500 रुपए से करिएगा, 1000 रुपए से करिएगा, 5000, 50,000, whatever the capacity, whatever the thing, you need to start. Please start now. With this, I'm so much grateful and thankful to all the people to allow me the time. Now, floor is open for the questions, and I'm all okay to take the question. Yes. Should we stop the recording? Let it be for some time. No? Okay, sure. So tell me, Ravi, we decided to start today. Yes. Hypothetical situation again. Yes. What should be my first step? You should start with 500 rupees, 5,000 rupees, whatever the amount you can. You should start with today itself. Then what should I do? Then you need to track it on a monthly basis. Track where? Where, ma'am? Sorry. So I've just taken out the 5,000 rupees from my income, and now where to invest? What to do? That's Just where the role of a financial SIP. consultant comes into picture. वो आपके साथ समझेगा आपकी प्रोफाइल को, बिकॉज मैम आपकी कंजर्वेटिव प्रोफाइल हो सकती है, आपको लगेगा कि नहीं मेरे को कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो देन ही विल अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड विल रिकमेंड दैट स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंगली. बट किसी की कोई अग्रेसिव प्रोफाइल है कि नहीं मैं तो मेरे को तो हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए, देन ही विल टेल you the different type of stocks and different type of mutual funds. जैसे मेरे केस में I have a client who is 21 years of age also, who is just pass out of college and got on to her first job, taken getting the second salary, and she found me and she hired me as a consultant. And I have a client who is 85 years of old, 85-year-old, and he is also taking my advice and managing his portfolio accordingly. So suppose I come to a financial consultant like you, what is the role of them? They will guide me what to buy, how to buy, the investment, LIC, for IT returns, everything, or just a little bit of area you will be covering. So if you comes to me, then first we need to create the destination. We need to create the goals. प्रॉब्लम हमारी यहीं से शुरू होती है कि वी डू नॉट नो द गोल्स, वी डू नॉट नो द डेस्टिनेशन. अगर मेरे को आप दिल्ली से आपके पास उज्जैन आना है, तो फर्स्ट आई नीड टू डिसाइड द डेस्टिनेशन. अब मैंने आना तो उज्जैन है, अब मैंने टिकट बुक करा दी इंदौर की, तो विल आई बी एबल टू रीच उज्जैन? दैट इज द मेन थिंग. सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द गोल्स. If जब I हमारे have वो three गोल्स years and I want to make the 5 crore corpus, is it called वेरी uh, एग्रेसिव. aggressive thing? यस, Then what should रियलिटी be? चेक करवाना जरूरी है. हाँ, aggressive है. चलिए aggressive ही है. But then you will help us do the aggressive steps also. Yes, 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 yes. So again, I'm repeating the same thing. Either we need to increase the amount, like 1 lakh rupees, 15% return, 10 years. By investing 1 lakh rupees in 10 years also is not giving 5 crore. So either we need to increase the time, or either we need to increase the amount of money. But if we invest 5 lakh rupees per month, which is hypothetical again, yes, you can achieve in 5 years 4.48. But if no one has 5 lakh rupees, you can start with 5,000 at least. Then you need at least 25 years. So it's a permutation and combination. यहाँ पे वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती. यहाँ पे हमारे को
कंबाइन करके यहाँ पे काम आता है हमारे को मिक्सिंग का, जहाँ पे हम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स जो हैं जो हाई ग्रेड रिटर्न देते हैं, एंड हमारा म्यूचुअल फंड, बिकॉज स्टॉक्स हमारे को 25% का रिटर्न दे देते हैं, म्यूचुअल फंड हमारे को 15% का रिटर्न देते हैं, तो कंबाइन करके जब हम 20% का रिटर्न लेकर आते हैं, देन इट क्रिएट्स द राइट अमाउंट ऑफ मनी। रवि जी, जैसे अब हमने तो जो गलतियां करी करी हैं, और जैसे अब हमारे बच्चे हैं, तो आज की डेट में अगर हमें 1 लाख रुपए खर्चा होता है, सपोज कि हमारे बच्चों को आज से 20 या 25 साल बाद रिटायर होना है, तो उस हिसाब से उनका उस समय क्या खर्चा होगा इन्फ्लेशन से? आप क्या सोचते हैं उस समय पर मंथ क्या खर्चा होगा, सो दैट हाउ मच मनी दे विल बी नीडिंग? तो मैम यहाँ पे ये मेरा ये वाला कैलकुलेटर काम में आता है, जहाँ पे हमारा आज की डेट में 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस है, और 1 लाख रुपीज के एक्सपेंस के बाद 20 ईयर्स बाद वो 3,20,000 का हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे को चाहिए कम से कम 11.5 करोड़ का कॉर्पस। फिर उसके लिए कितनी मंथली इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कि सजेस्ट? लेट मी शेयर यू। So in 20 years, we need 11.2 crore. Then we will be requiring at least 50,000. Step up of 10%, 15%, 20 years will give you 14 crore. But 50,000 is a huge investment. हमको अगर हमारे को अपने को फाइनेंशियल सिक्योर करना है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 50,000 अभी नहीं कर सकते, बट आप 1% ऑफ योर सैलरी से तो कर सकते हो ना। सो सपोज इफ you do not have the money to invest right now, start with 1%. Even if you have a 1 lakh rupees of salary, आपकी 99% सैलरी सारे खर्चों में और ईएमआई में सब जगह पे जा रही है, कांट यू स्टार्ट विद 1% ऑफ योर सैलरी एज ए एसआईपी, देन 2% ग्रेजुअली इंक्रीज, देन 3%, 1 ईयर में आपका 12% हो जाएगा, 3 ईयर्स में आपका 36% हो जाएगा, एंड दैट इज द आइडियल ऑप्टिमम एलोकेशन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। बट 3 ईयर्स आपको सस्टेन बेसिस पे कंटिन्यूसली करते रहना है, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट अगेन कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज दिस ही ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी। जब आप उनके साथ मंथली कनेक्ट करोगे, तो आपसे पूछेगा मैम आपकी इतनी सैलरी है, आपका इतना खर्चा है, आपका इतना गोल है, आप कैसे मैनेज करोगे? प्लीज फॉलो द प्लान जो मैंने आपके लिए लेड आउट करा है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर डेस्टिनेशन, योर फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। अगर हमें ये सारी चीजें खुद से अचीव करनी होती तो अब तक हम कर चुके होते। वी ऑल आर हेयर एट लीस्ट above 40-45 people. We are working from last 15-20 years. And those people who are not working, that's also okay. तो अगर हमारे को अभी अचीव करना होता, तो we could have achieved it till now. हाँ, तो एक बात बहुत बड़ी बात समझ में आई है रवि जी मुझे, कि Yes. हम सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम ये Yes. नहीं सोचते कि आज से 20 साल बाद हमारे इन्फ्लेशन के साथ हमें इतने पैसे चाहिए Yes. होंगे, तो हमें Actually. कितने पैसे अभी से निकालना पड़ेगा, चाहे हमें Yes. खर्चा कम करना पड़े या कमाई ज्यादा करना पड़े। वो Yes. एक बात है कि अगर हमें करना है तो हमारा, हम फ्यूचर नहीं देख पा रहे कि फिर तो हम थोड़े दिनों बाद हमारे 1 लाख रुपए तो हम गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे शायद। Actually. Actually मैम, हम्म। अब आप ये सोचिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल एक और देता हूँ। सुशील कुमार, करोड़पति, फर्स्ट 5 करोड़ करोड़पति चैंपियन, याद है? कौन बनेगा करोड़पति का? सुशील कुमार, जिसने 5 करोड़ पहली बार जीता था। क्या हुआ उसके साथ? डोंट नो। वो पहले से भी वर्स्ट सिचुएशन में आ गया। पहले वो अच्छा वाला, एटलीस्ट एक वो स्कूल मास्टर की जॉब कर रहा था, तो उसको रेगुलर सैलरी आ रही थी और उसी हिसाब से वो कर रहा था। 5 करोड़ में 1.5 करोड़ तो टैक्स निकल गया था, तो हाथ में आए थे 3.5 करोड़, और 3.5 करोड़ के बाद वो सारा पैसा उसने इधर उधर इधर उधर इधर उधर बांटता चला गया, और जॉब भी नहीं कर कर रहा था, और वो वर्स सिचुएशन में आ गया। अगर
उसी पैसे को मैनेज करने के लिए वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर कर लेता उस टाइम पे। रवि, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग। हम जो 15% कमाएंगे उसमें हमको टैक्स भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो मतलब हमें 18, 19, 20% कमाना पड़ेगा टू गेट एक्चुअली गेट द 15% रिटर्न। मैम ये सब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपका जब आप सेल करोगे तभी तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सेल ही नहीं करोगे, आप कंटिन्यूसली कंपाउंड इन्वेस्ट कर रहे हो और कंपाउंड कर रहे हो, तो फिर क्यों टैक्स देना पड़ेगा? सपोज यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स at a rate of 50,000 rupees every month, but you are not selling. You will be selling after 20 years, 15 years, when you do not have any income. तब तो कोई टैक्स नहीं है। तो वो तो टैक्स तो तब होता है जब आपका कैपिटल गेन्स, अच्छा सपोज करके आपकी 12 लाख रुपए की सैलरी है और आपका 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन बना, तो 12 लाख रुपए तक तो वैसे ही आपको कोई टैक्स नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 20 लाख रुपए की सैलरी है, तो 20 लाख की सैलरी आपकी चार्ज हुई 30% टैक्स स्लैब पे। जो कैपिटल गेन जो चार्ज होगा लॉन्ग टर्म होगा वो 12.5% पे होगा। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अब नाउ यू हैव रिटायर्ड एंड यू डू नॉट हैव एनी इनकम, नाउ यू आर redeeming your investments. At that time, as you do not have any income, then there is no point of taxation, because अगर आप कैपिटल गेन भी देख रहे हो तो वो कैपिटल गेन आपकी इनकम से तो कम है ना।